Hello my dear students, I welcome you all in your mathematics class. Today we are going to learn chapter 9 Operations on Decimal Numbers part 2. First of all, we discuss some important notes. Multiplication of decimal numbers. First, multiplication of a decimal by 10. When a decimal number is multiplied by 10, we simply shift the decimal point one place to the right. That means अगर हम कोई भी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डेसिमल पॉइंट को वन प्लेस तक राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल 6.375 मल्टीप्लाई बाई 10. तो हम यहाँ पे ये जो डेसिमल नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो हम डेसिमल पॉइंट को वन प्लेस तक राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 63.75. नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर्स बाय 100. दैट मीन्स डेसिमल नंबर का 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन. When a decimal number is multiplied by 100, we shift the decimal point 2 places to the right. That means अगर हम कोई डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड में 2 प्लेस तक शिफ्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल 26.335 मल्टीप्लाई बाई 100. इस डेसिमल नंबर में डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेस तक शिफ्ट करने से हमें प्रोडक्ट मिलेगा 2633.5. नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर्स बाय 1000. व्हेन अ डेसिमल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1000, वी शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस टू द राइट. दैट मीन्स अगर कोई डेसिमल नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड में 3 प्लेस तक शिफ्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल 0.1725 मल्टीप्लाई बाई 1000. तो 1000 में 3 0 है तो हम डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड में 3 प्लेस तक शिफ्ट करेंगे. सो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 प्लेस तक शिफ्ट किया तो हमें प्रोडक्ट मिला 172.5. मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय अ होल नंबर. दैट मीन्स डेसिमल नंबर का होल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन. फॉर दैट वी फॉलोइंग स्टेप्स. A. Multiply the decimal number without the decimal point by the whole number. Next, B. Place the decimal point so as to obtain as many decimal places in the product as there are in the decimal number. That means डेसिमल नंबर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेसिमल नंबर में से डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे एंड उसके बाद हम डेसिमल नंबर एंड होल नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. एंड प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद हम प्रोडक्ट में इतने डेसिमल प्लेसेस जनरेट करेंगे जितने डेसिमल प्लेस गिवन डेसिमल नंबर में है. नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय अ डेसिमल. दैट मीन्स डेसिमल नंबर का डेसिमल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन. स्टेप 1. Multiply the two decimals without the decimal point. Step 2. In the product, place the decimal point so that the number of decimal places in the product is equal to sum of decimal places in the two decimals. That means अगर हम कोई दो डेसिमल नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों डेसिमल नंबर में से डेसिमल पॉइंट को रिमूव करके प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. उसके बाद दोनों डेसिमल नंबर के टोटल डेसिमल प्लेस जितनी डेसिमल प्लेसेस प्रोडक्ट में भी जनरेट करनी है. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स. फर्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ अ डेसिमल नंबर एंड 1 इज द डेसिमल नंबर इटसेल्फ. दैट मीन्स डेसिमल नंबर एंड 1 का प्रोडक्ट हमें डेसिमल नंबर इटसेल्फ मिलता है. सेकेंड, the product of a decimal number and 0 is a 0. That means decimal number का 0 के साथ multiplication हमें 0 मिलेगा. थर्ड,
Changing the order of multiplication of a decimal number with a whole number or a decimal number does not change the product. That means decimal number and whole number के multiplication में order change करने से product change नहीं होता है. Fourth, changing the order of multiplication of 3 or more decimal numbers does not change the product. That means 3 or more than 3 decimal number के multiplication में order change करने से product change नहीं होता है. Now we are going to start activity 2, which is based on multiplication of decimal numbers. Question number 1. Multiply. A 6.25 multiply by 10. तो यहाँ पे हमें given decimal number को 10 से multiply करना है. तो decimal point को 1 प्लेस तक राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे. सो हमें प्रोडक्ट मिलेगा 62.5. नेक्स्ट सी 28.625 मल्टीप्लाई बाई 1000. तो हमें यहाँ पे गिवन डेसिमल नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करना है. सो हम डेसिमल पॉइंट को 3 प्लेस तक राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे. सो हमें प्रोडक्ट मिलेगा 28,625.0 and this is equal to 28,625. Next, multiply 0.05 and 1000. तो हम यहाँ पे गिवन डेसिमल नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो डेसिमल पॉइंट को 3 प्लेस तक राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है. 1, 2. अब यहाँ पे कुछ भी डिजिट नहीं है तो हम 0 को ऐड कर सकते हैं एंड उसके बाद हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे. सो हमें प्रोडक्ट मिलेगा 0050.0 and this is equal to 50. Next G 1.098 multiply by 1000. 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट को 3 प्लेस तक राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है. सो 1, 2 and 3. सो वी गेट आंसर 1098.0 and this is equal to 1098. Next I 0.12 multiply by 10,000. तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे. 10,000 में 40 है. सो हम डेसिमल पॉइंट को 4 प्लेस तक राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे. सो 1, 2. अब यहाँ पे डिजिट नहीं है तो हम 0 को ऐड कर रहे हैं. 3. अगेन यहाँ पे डिजिट नहीं है तो 0 को ऐड करेंगे एंड 4. सो वी गेट प्रोडक्ट 01200.0 and this is equal to 1200. Remaining sums of this question you will do in your homework. Question number 2. Find the product. A 36.5 multiplied by 5. First of all, we multiply decimal number without decimal point by the whole number. So 365 multiplied by 5. 5 5s are 25. Carry on 2. 5 6 are 30. 30 plus 2 32. Carry on 3. 5 3s are 15. 15 plus 3 18. Here we observe that the given decimal number has 1 decimal place. सो हमें प्रोडक्ट में भी 1 डेसिमल प्लेस जनरेट करना है. थस 36.5 multiplied by 5 is equal to 182.5. Next, C 11.11 multiplied by 92. First of all, we multiply decimal number without decimal point by the whole number 92. So
1111 multiplied by 92. First of all, we multiply this number by 2. So 2 ones are 2, 2 ones are 2, 2 ones are 2, 2 ones are 2. Now we multiply this number by 9. But 9 is present at tens place, so we put 0. So 9 ones are 9, 9 ones are 9, 9 ones are 9 and 9 ones are 9. Now we add these two numbers. 2 plus 0, answer is 2. 2 plus 9, answer is 11. Carry on 1. 1 plus 2, 3. 3 plus 9, 12. Carry on 1. 1 plus 2 plus 3, answer is 12. Carry on 1. 1 plus 9, 10. Here we observe that the given decimal number has 2 decimal places. Therefore, we generate 2 decimal places at the product. So, 11.11 multiplied by 92 is equal to 1022.12. Next is 0.75 multiplied by 0.29. First of all, we multiply given decimal numbers without decimal point. So, 75 multiplied by 29. First of all, we multiply 75 by 9. 9 fives are 45. Carry on 4. 9 sevens are 63. 63 plus 4, 67. Next, we multiply 75 by 2. But 2 is present at tens place, so we put 0. So 2 fives are 10. Carry on 1. 2 sevens are 14. 14 plus 1, 15. 5 plus 0, answer is 5. 7 plus 0, answer is 7. 6 plus 5, answer is 11. Carry on 1. 1 plus 1, answer is 2. Here we observe that sum of decimal places in the given decimals is equal to 2 plus 2. This is equal to 4. So, we put decimal point in the product so as to have 4 decimal places. Thus, 0.75 multiply 0.29 is equal to 0.2175. Next, G. Multiply 0.93 by 0.84. First of all, we multiply the given two decimal numbers without decimal point. So, 93 multiplied by 84. First of all, we multiply 93 by 4. 4 3s are 12. Carry on 1. 4 9s are 36. 36 plus 1, 37. Next, we multiply 93 by 8. But 8 is present at tens place, so we put 0. 9 3s are 24. Carry on 2. 8 9s are 72. 72 plus 2, 74. Now we add these two numbers.
2 plus 0 answer is 2. 7 plus 4 answer is 11. Carry on 1. 1 plus 3 plus 4 answer is 8 and 7 as it is. Here we observe that sum of decimal places in the given decimals is equal to 2 plus 2 is equal to 4. So, we put the decimal point in the product so as to have 4 decimal places. Thus, 0.93 multiplied by 0.84 is equal to 0.7812. Next, I 1.11 multiplied by 2.2 multiplied by 0.9. First of all, we multiply 1.11 and 2.2 without decimal point. So, 111 multiplied by 22. First, we multiply 111 by 2. Here 2 is present at 1's place. So, 2 ones are 2, 2 ones are 2 and 2 ones are 2. Now, we multiply 111 by 2 times. 2 times प्लस पे है सो हम यहाँ पे 0 रखेंगे. Now 2 ones are 2, 2 ones are 2 and 2 ones are 2. Now we add these two numbers. 2 plus 0 answer is 2. 2 plus 2 answer is 4. 2 plus 2 answer is 4 and 2 as it is. Here we observe that sum of decimal places in the given decimals is equal to 3. Therefore, we put the decimal point in the product so as to have 3 decimal places. So, product of these two is equal to 2.442. Now, we multiply 2.442 by 0.9. First of all, we multiply these two decimal numbers without decimal point. So, 2442 multiplied by 9. 9 2s are 18, carry on 1. 9 4s are 63. 63 plus 1. Next, 9 4s are 36. 36 plus 1, 37. Carry on 3. 9 4s are 36. 36 plus 3, 39. Carry on 3. 9 2s are 18. 18 plus 3, 21. So, here we observe that the sum of decimal places in the given decimals is equal to 4. So, we put decimal point in the product so as to have 4 decimal places. So, we get product 2.1978. Remaining sums of this question you will do in your homework. Next, question number 3. The cost of a pen is rupee 25.35. Find the cost of 45 such pens. That means one पेन की cost 25.35 रुपये है and 45 पेन के लिए हमें cost find करना है. To find total cost, we just multiply cost of one pen and number of pens. This is due in your homework. Next, we solve question number 4. A car covers 40.5 km in 1 hour. How much distance will it cover in 18 hours? That means car 1 hour में कितना डिस्टेंस कवर करती है वो यहाँ पे गिवन है एंड 18 आवर्स के लिए हमें फाइंड करना है. सो द डिस्टेंस covered
by car in 1 hour is equal to 40.5 kilometer. Therefore, the distance covered by car in 18 hours is equal to 18 multiplied by 40.5 kilometer. Now, to multiply these two numbers, we simply multiply the decimal number without the decimal point by the whole number. So, 405 multiplied by 18. 8 5s are 40, carry on 4. 8 zeros are 0, 0 plus 4, 4. 8 4s are 32. Next we multiply 405 by 1, but 1 is a present in tens place, so we put 0. 1 5s are 5, 1 zeros are 0 and 1 4s are 4. So 0 plus 0 answer is 0, 4 plus 5 answer is 9, 2 plus 0 answer is 2 and 3 plus 4 answer is 7. Here we observe that the given decimal number has one decimal place. So we generate one decimal place in product. So we get answer 729.0 kilometer. And this is equal to 729 kilometer. Thus, the distance covered by car in 18 hours is 729 kilometer. Next, we solve question number 5. 1 kg of rice cost rupee 75.50. What will be the cost of 4 kg of rice? So 1 kg राइस के लिए कॉस्ट 75.5 रुपये है एंड 4 kg के लिए हमें फाइंड करना है. सो द कॉस्ट ऑफ 1 kg of rice is equal to rupee 75.50. Therefore, the cost of 4 kg of rice is equal to rupee 75.50 multiplied by 4. To multiply these two numbers, we simply multiply the decimal number without decimal point by whole number. So 7550 multiplied by 4. 4 zeros are 0, 4 5s are 20, carry on 2. 4 5s are 20, 20 plus 2, 22, carry on 2. 4 7s are 28, 28 plus 2, 30. Here we observe that given decimal number has 2 decimal place. So we generate 2 decimal place in product. So answer is rupee 302.00 and this is equal to rupee 302. Thus, the cost of 4 kg of rice
is rupee 302. Here we completed the activity 2 of chapter 9. Thank you one and all.